Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatharine. I know Guru. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kuja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Devadari, Jaya Gopi Jana Vallabha Devadari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Rajana Ranjana, Jira Manachari, Andhira Sari, Jaya Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaur Hari Bol. Nikai Go Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Namo Vishwat Namo Sadguru Krishnaya Asha Shivaya Divine Grace Shri Bhaktivedanta Swami Shiva Prabhupada Ki Jai. Namo Vishwat Namo Sadguru Krishnaya Asha Shivaya Divine Grace Shri Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ananta Kota Vaishya Vrindati Jai. Prem se karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakti Jai. Vrindavan Dham Vijay, Mathura Dham Vijay, Mayapur Dham Vijay, Jagannath-puri Dham Vijay, Munamaya Vijay, Gangamaya Vijay, Harinam Sankirtan Vijay, Chaitanya Lotus Kushin Vijay, Chaitanya Vasant Vishnu Vijay, All India Padayatra Vijay, ISKCON Mohini Jai, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guru Rama, all glories to Divine Grace, Shri Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya, International Society for Krishna Consciousness. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Today is the feast day of Bhagavad Gita. आज जो है रविंद्र देव भूषण जी का आविर्भाव दिवस है। One of the prominent acharyas in the line of Lord Brahma and the Gaudiya Sampradaya
श्री महाप्रभु ब्रह्मवर्ग संप्रदाय में महाप्रभु के माध्यम से आने वाले सबसे महत्वपूर्ण आचार्यों से एक हैं। And also this is the day when Lord Mother Ganga made her descent. So today is Ganga Puja. और आज जो है गंगा जो माता है उनका भी आविर्भाव हुआ है, तो आज गंगा पूजा भी है। Today is Ganga Puja. And so when she descended to the earth जो पृथ्वी पर प्रकट हुई थी from Vaikuntha, वैकुंठ से, so we will discuss हम चर्चा करेंगे the verse इस श्लोक is in regard to Mother Ganga. गंगा देवी के से संबंधित ये श्लोक है। I can begin with the appearance of Baladevi Vibhushan. And here is make a very major contribution हम बलदेव के विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है ब्रह्मवर्ग वैष्णव संप्रदाय में। So Sri Baladevi Vibhushan appeared in the 1600s near Ramuna, Orissa. तो श्री बलदेव के विषय में 1600 सदी के समय रेगुना, जो उड़ीसा में एक रेगुना स्थान है, वहाँ पे उनका प्राकट्य हुआ। Ramuna is the famous deity of Shivchor Gopinath. रेगुना वो जगह है जहाँ पे खींची और गोपीनाथ के बहुत ही फेमस विग्रह हैं। Madhavendra Puri who introduced the worship of Radha Krishna specific succession. तो माधवेंद्र पुरी और राधा कृष्ण की वर्षिप करने का शुरू किया था उन्होंने। He is well known for how the deity personally arranged for him to get a pot of sweet rice. बहुत फेमस है वो, क्योंकि वो इसलिए फेमस है क्योंकि जो डीटीज हैं भगवान जो है स्वयं उनके लिए एक खीर का प्याला अरेंज किया उन्होंने, उनके लिए व्यवस्था की विग्रह भगवान ने। Cheer chor, खीर चोर गोपीनाथ, chor like Makan chor, Krishna's Makan chor, stealing. कृष्ण जैसे माखन चोर है जो चोरी करते हैं, खीर चोर। Krishna will steal. If anything Krishna does attracts you to his heart. So he is the biggest thief. भगवान कुछ भी करते हैं तो हमारे हृदय को बहुत आनंद पहुंचाते हैं। भगवान जो है सबसे बड़े चोर हैं। Because he's actually expert at stealing the heart of his devotee. क्योंकि भगवान जो है दक्ष हैं हमारे हृदय को चुराने के लिए। And that is the whole purpose of everything that Krishna does. भगवान कुछ भी करते हैं उसका जो असली उद्देश्य है वो यही है, To deepen that loving relationship between him and his loving devotee, to increase that attachment and that devotion, that love. हर चीज़ का उद्देश्य यही है कि भक्तों के साथ कैसे जो संबंध है भगवान का उसको कैसे गहरा और उसको कैसे और अच्छा बनाएंगे।
So anyway, so probably the Vibhushan is born in very, very holy place. बलदेव विद्याभूषण जो है बहुत ही धार्मिक जगह पे उनका प्रकट हुआ था। And also here, couple hundred kilometers is Vrindavan, the most holy place. और यहाँ से All of you, बस 100 किलोमीटर दूरी सबसे अच्छी और सबसे उत्तम धार्मिक जगह है वो क्या है वृंदावन। and also the Pandavas here in Hastinapur, Delhi. और जहाँ पे हम बैठे हैं वो हस्तिनापुर है, यहाँ स्वयं पांडव रहे। They were ruling here. वो यहाँ पे राज्य करते थे। And all the emperors also. और सारे जितने राजा थे वो यहाँ रहते Many of them very great devotees. और कई जो उसमें से राजा थे उनमें से कई जो है महान भक्त भी थे। Right here in Delhi, और यही Hastinapur, this is Hastinapur. दिल्ली में जो ये हस्तिनापुर है। So this is a holy place. तो ये भी एक धार्मिक जगह है, होली प्लेस है। Dhamvasi. हाँ Special. I am born only because of Prabhupada. I can think my home is Vrindavan because by birth I'm a New York Narakvasi. तो जी हम कह रहे हैं कि ऐसे तो मेरा जन्म न्यूयॉर्क में हुआ है, जो नरक प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभु जी ने वृंदावन में रह गए। Prabhupada came to hell. That's so nice. It is not nice. I know. Very well. ठीक नहीं है, मुझे पता है। The Prabhupada came to Narak, to New York, to bring me here. प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क आए, नरक में आए और मेरे को वहाँ से निकाला है। To show me my real home, that I'm spirit soul, I'm not the body. मुझे अपना असली घर दिखाने के लिए I'm not American, and you are not Indian, that we are. मैं न्यूयॉर्क का नहीं हूँ, मैं भारत का A real home, we are meant to be Vaikuntha, Golok, Vaikuntha. मेरा असली घर जो है वो भगवान का Living धाम है। Vaikuntha Vasis, not here in this material world. इस भौतिक जगत में नहीं, मेरा जो असली घर है वो भगवान के धाम में, वैकुंठ में। So this whole Bhagavatam is Krishna's deity. This is Murti, Krishna, in book form. भागवतम में वो कृष्ण है, कृष्ण की मूर्ति है किताब के फॉर्म में, किताब में। And then you can appreciate the deity on the altar when you hear about Krishna and you understand him through the Shastra. जब आप कृष्ण के बारे में सुनेंगे, उसको समझेंगे, तब आप भगवान की जो विग्रह हैं उनको देखकर उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे, उसकी सराहना कर पाएंगे। But every day you study and you hear and you by Prashnena Sevaya, you inquire about Krishna, you ask questions like a student in school. This is the real education for the soul. ये हर दिन हमें करना है, हर दिन हमें भागवतम पढ़ना है, समझना है और उससे परिप्रश्नेन सेवा करना है, प्रश्न पूछने हैं और उसको समझना है, जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। असली जो विद्या है वो यही है। Because we are spiritual beings in a material body. हम लोग जो आध्यात्मिक आत्मा है ये भौतिक शरीर के अंदर। But we are spiritual beings having a material experience. हम जो है आध्यात्मिक आत्मा है इस भौतिक विचारधारा में। Because we forget our spiritual identity, our spiritual devotion, our love for Krishna, we thinking, I am God, I will enjoy. For me, everything is for me. क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, भगवान का अंश हैं, तो हम क्या है यहाँ पे आकर भौतिक सृष्टि में ये कह रहे हैं कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। And then we think I am the best, and everyone should glorify me, and I should enjoy my senses, my body.
we become attached to calm and love and growth. We cannot control our mind and senses. तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मुझे enjoy करना है, मुझे enjoyment करनी है। Only the devotee can truly control his mind because his mind is attached to Krishna. तो सिर्फ भक्ति जो है वो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है क्योंकि उसका मन जो है भगवान में लगा हुआ है। Eternal relation, क्योंकि उसका संबंध real position of the soul to love Krishna. असली स्थिति है आत्मा की वो भगवान को प्रेम करना है। So now we have the role, तो अब हमें material enjoyment, the role, the disease. अब हमें जो है ये भौतिक भोग की जो बीमारी को दूर करना है। So by hearing about Krishna, the mind changed. By thinking about Krishna, hearing and speaking, then we clean the mind. भगवान के बारे में सुनकर, उसको समझकर और उसको बोलकर हम जो है अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, मन को बदल सकते हैं। So when we discuss these topics about Krishna and his pure devotees, हम इसीलिए भगवान की और भगवान के शुद्ध भक्तों की कथाओं के बारे में चर्चा करते हैं। your mind becomes the quality of what you think about, what you think most about. हमारा मन वैसा हो Your जाता है, mind becomes pure like Ganga. हमारा मन वैसा हो जाता है जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं, हमारा मन गंगा के समान हो जाएगा। Then we can go back to Krishna because our heart is purely devotion to Krishna. तो हम जब शुद्ध हो जाएंगे, गंगा के समान हमारा मन हो जाएगा, तब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। And that is why Mahaprabhu comes to give Harinam, Harikatha, Bhagavatam. Prabhupada sending Prabhupada to give in 87 languages now, 60 crore pushed up. People are having Bhagavatam class in the whole planet. इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ है, हरिनाम, हरिकथा, प्रभुपाद, भागवतम, ये सब कुछ देने के लिए 60 मिलियन पुस्तकों से ज़्यादा लोग पहुँच चुका है। Only because of him and how he came to America with so much struggle. ये सब इसलिए हो पाया कि प्रभुपाद जी ने संघर्ष किया, वो न्यूयॉर्क गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत संघर्ष किया। But I am able to sit here and speak about Bhagavatam and Bhagavad Gita and about my real self and how we are all Krishna's family. मैं यहाँ पे बैठकर बोल पा रहा हूँ क्योंकि भागवतम के बारे में, भगवद गीता के बारे में, अपने बारे में कि मेरी असली स्थिति क्या है। And if we can continue to distribute these books in the holy name and prasadam like the whole world, instead of thinking I am Indian and American and Russian and Chinese and Pakistan and all this, I am the body. No, but that we are Krishna's family, we are all spirit soul. This is the science for the human being. तो अगर हम यहाँ की पुस्तकों को बांटेंगे तो पूरे विश्व में लोगों को पता चल पाएगा कि हम भारतीय नहीं हैं, रशियन नहीं हैं, हम स्पेनिश नहीं हैं, अलग अलग नहीं हैं, हम जो है आत्मा हैं, भगवान का अंश। Then we can get scientific understanding, science, real truth, Atma Tattva, Pakka, तो ये जो है एक विज्ञान complete है, knowledge, ये विज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, Purna Tattva, पूर्ण तत्व है वो। Samam Bonam, the absolute truth. तो हर चीज का जो असली सच है ये। Am Savasya Prabhu Matasavam brought today, Utima Bhavajante Mam Buddha Bhava Samandita. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly engage in devotional service and worship you with all their hearts. तो भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि हर चीज मुझसे ही उत्पन्न होता है। हम सर्वस्य प्रभु मत्ता पर सर्वम प्रभु, हर चीज मुझसे उत्पन्न है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको समझकर मेरी भक्ति करता है। So the mind is contamination as material attachment. We have to clean the mind by hearing about Krishna. मन जो है भौतिक आसक्तियों से दूषित हो रखा है, हमें मन को साफ करना होगा। Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. When we hear nicely, then we can speak nicely.
Krishna Katha. श्रवणम कीर्तनम Here, विष्णु स्मरणम। we discuss. अगर हम ढंग से सुनेंगे तो हम बोल सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। And then we can remember and think of Krishna. तब हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं और याद रख सकते हैं भगवान को। Now this room, this building, is not just coming by chance, like they say the whole universe is coming from a black hole by a chunk and a lightning bolt, and all the planets in their orbit, everything, sun, moon, everything is moving just by some lightning bolt explosion. No person, ये बिल्डिंग जो है, just by chance, just by, how you can create anything by chance. ये बिल्डिंग अपने आप प्रकट नहीं हुई है। तो लोग बोलते हैं कि अपने आप ही सब कुछ हो गया। तो जैसे कई साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि ब्लास्ट हुआ और सृष्टि की रचना होगी, तो ऐसा नहीं है। कैसे कोई भी चीज़ अपने आप प्रकट हो सकती है? Just like this room, we are in the room. हम इस रूम के अंदर हैं। We are the living person. The room is not living; it's matter. हम जीवित पुरुष हैं। ये जो रूम है ये जीवित नहीं है। In the same way, we are in this body. This is also the room. हम इस शरीर के अंदर हैं। ये भी एक रूम है। शरीर भी एक रूम है। For some time, it's material. It has a beginning, some living stay for some time, and then eventually this room will all go back to the earth. तो जिस तरह से ये रूम जो है प्रकट हुआ है, उसके बाद कुछ समय बाद खराब हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी में मिल जाएगा। उसी तरह से हमारा शरीर भी जन्म लेता है और कुछ समय के बाद उसका नष्ट हो जाता है। Because of the presence of the eternal living soul, the person in the room, and that he makes this arrangement of matter, putting earth and water and fire together, making bricks and concrete, and taking the marble, the earth, and putting it in a nice shape so we can stay, we can sit in this room. तो एक जो जीव है वो क्या है, तो कंक्रीट बना के, पत्थर बना के, मार्बल बना के और सारा अरेंजमेंट करके अच्छे से व्यवस्था करता है कि हम इसमें रह सकते हैं। So we are in this material body because we have material attachment for just enjoying away from Krishna. I want to be Krishna. हमारे पास भौतिक शरीर है। I want to enjoy separately, independent. हमारे पास भौतिक शरीर है क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक आसक्ति है कि मैं भोग करना चाहता हूँ। मैं भगवान से, कृष्ण से अलग होकर भोग करना चाहता हूँ। But as Krishna Kapacha, we are His eternal loving Amsh. Amaivancha Jiva Jivata Saratara Anashta Anindriyani Prakatistani Kyoshiti. All living entities in this conditioned world are internal parts, fragmental parts, due to their conditioning, they're struggling very hard with the six senses, which include the mind. हम लेकिन असलियत में भगवान के अंश हैं और अपने मन और छह इंद्रियों जिनमें भी मन भी है, इसके कारण हम इस भौतिक जगत में संघर्ष करते हैं। So when the body dies, then the soul continues to live in another body. जब शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा है वो जीवित रहती है, अगले शरीर में स्थानांतरित होती है। And then we get another set of ear, eye, nose. See? The room, the matter gets shaped in the womb of the mother. हमें फिर से दूसरा शरीर मिलता है, नई आंखें, नई कान। By Krishna's arrangement with the demigods assisting him. भगवान की कृपा से होता है, कृष्ण की कृपा से To get a new body, like this little boy. देवताओं के माध्यम से, जैसे बच्चा पैदा हुआ है। Dehinosmin yatadehe komaram yovanam jara tatadayantara praptir dhirastachanuriyati. As the embodied soul passes from boy to youth to old age, the soul passes to another body of death. Body is changing, soul is same. I'm the same. I had a 5-year-old, 6-year-old body. My body changing now, Jara, 72. But I'm the same person. And I'm Krishna's eternal bacha. The body the machine is getting old. But the soul never gets old, never gets death, disease.
The soul is completely separate आत्मा जो है inside. कभी विनाश नहीं होती। जैसे बच्चा है तो बच्चे से शरीर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आत्मा सेम है। तो मैं जो हूँ, मैं भी क्या है कि 72 साल का हो गया हूँ, मेरा भी छोटा साइज था, मैं भी बच्चा था, अब बड़ा हो गया। आत्मा वहीं पे है, आत्मा नहीं बदलती। और आत्मा जो है असली बच्चा है भगवान का, भगवान का अंश है। So the more we hear about Krishna, Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, the more we read these books, and so even beginning with small books, to get used to this subject matter, because there's nothing in the world that is giving this education for the human being. तो कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा मनुष्य के लिए। आप गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, चैतन्य पढ़िए, या कोई भी छोटी सी बुक पढ़िए बाहर से लेकर, तो उससे क्या होगा, ये ज्ञान आपको प्राप्त हो पाएगा। कोई भी दुनिया में ये ज्ञान नहीं दे रहा है। We must learn and want to learn about God and how He's caring for us, even when we're against Him. We don't want Him, and we come and He makes arrangement for our desire. तो हम जो है भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। भगवान इतने दयालु हैं, हम इतने बदमाश हैं, मतलब भगवान से द्वेष करते हैं, फिर भी भगवान हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। So He can give you any kind of body for your desire. He can give you in the material world, big body. You can have sex with babies, with children, with men and women. Anything. You can have no regulation, just for your material gratification of your touch, your eyes, the movie stars, you know, and how they're drinking and have sex like animals. भगवान जो है हमारी इंद्रिय के लिए drugs, सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, जो हमारी no आंखों principle, को, only for the senses. हमारी इंद्रियों को जो भी अच्छा लगता है, हमारी आंखों को, हमारे चमड़े को, हमारे कानों को जो भी अच्छा लगता है, भगवान हमारी इच्छाओं के अनुसार में जो भी चाहिए वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं। And they want unlimited pleasure, but they get unlimited madness. More, and they have no limit. They go crazy. और हम चाहते हैं कि हमें और आनंद चाहिए, हमें और आनंद चाहिए, हम और भोग करने का प्रयास करते हैं। I come from a rich family. My father ended up with gun, suicide. My sister, 31 with child, hanging from fan. This is the result. तो मैं What is coming now in India? मैं बहुत अमीर परिवार से आया हूँ। Babies, no marriage. This is the education of the cinema, of the school. No Brahmin teachers, no truth. Only how to be a cheater, a liar. Criminal. अमीर परिवार से आता हूँ। Criminal education. मेरे पिताजी Criminal को system. तो उनको गोली से मार दिया गया था। जो मेरी बहन थी वो फांसी में टंग गई थी। तो ये समाज है और ये भी भारत में भी आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी यही सारी चीजें हो रही हैं। ये सब जो है ये क्रिमिनल एजुकेशन है। ये जो है ब्राह्मण नहीं है जो सही ज्ञान दे सके, तो गलत ज्ञान को फैलाया जा रहा है। Does anyone know how to milk the cows like Nanda, Krishna, and Balaram? Anybody know how to milk the cow and get milk? किसी को पता है यहाँ पे Who takes care of the cow? गाय का दूध कैसे निकाला जाता है? Who has a direct relation with Gomata? Anybody? No. Yes? Very nice. You are the future to save the human race. आप जो भविष्य हो मनुष्य जीवन को बचाने के लिए। So Prabhupada wants us to get out of Delhi, the most pollution industry for rats and cockroaches, this place. Not for cows and peacocks, moyer and shuka, the parrot. We don't see, we see crows and pigeons. Very dirty place. प्रभारी चाहते थे कि हम दिल्ली से बाहर जाएं। दिल्ली के अंदर कॉकरोच हैं, No soup. मॉस्किटोज, कॉकरोच यही भरे हुए हैं। लेकिन प्रभारी चाहते थे हम ऐसी जगह जाएं जहाँ मोर हैं, तो कोयल हैं, और बहुत अच्छे अच्छे पक्षियाँ हैं। It's very nice. मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। Let me go to New York मुझे न्यूयॉर्क जाना चाहिए। and increase my calm and low और मुझे control, अपना काम become क्रोध more animal. जानवर बन जाना चाहिए। Nothing of God, nothing of the भगवान soul. के बारे में नहीं सोचते, आत्मा के बारे में नहीं सोचते हैं। How we can become loving and
peaceful with even the flies, seeing the हम fly कितने प्रेम पूर्वक as my brother. इवन जो मक्खियाँ हैं, उनके साथ भी प्रेम कर सकते All हैं। living beings are Krishna's family. सारी चीजें भगवान के ही परिवार के लोग हैं। And to understand how we get the fly body, if we act in a certain way, we like eating anything, having sex, they can have sex in the air. हम अगर सही से कार्य नहीं करेंगे तो हमें भी वैसा ही शरीर मिल जाएगा, मक्खी का शरीर। So you like to have just animals like sex, you can have any kind of body and you can do it. हमें कैसा भी शरीर मिल सकता है जैसा हम कार्य करेंगे। मक्खियाँ जो है You can fly all around and have sex and eat garbage, eat anything, non-veg, anything. हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं नॉनवेज खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वैसा ही शरीर हमें मिलेगा। That is not happiness. लेकिन वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है। Happiness is love. हैप्पीनेस जो है प्रेम है। Eternal. We are eternal. वो खत्म नहीं होगा, हमेशा के लिए रहता है। We don't have to long of getting this old age. I don't know, 72. No. I cannot run like I could before. I cannot jump and dance and kirtan like that now. तो आनंद ये नहीं है, शरीर है 72 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं कीर्तन में नाच नहीं सकता, कीर्तन में चल नहीं सकता। But if we live with our mind and our actions for Krishna, लेकिन अगर हम मन और and acting, and to give this to others, अगर हम मन और शरीर से भगवान के लिए कार्य करेंगे, then we get another kind of inspiration and strength and happiness and attachment to Krishna, where that becomes our real happiness and strength, coming from Shaktiman, Krishna, in the heart, with our soul connecting to Prabhupada and Krishna, Vrindavan. Our mind is full of Vrindavan quality and activity. Krishna, Lila Purushottam, Bhagavatam. We must hear and study and think of this, and then our mind change. And then we get spiritual body with spiritual relationships. जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे तो हमें असली आनंद प्राप्त होगा। The reality of our pure life, our healthy, normal, natural, healthy life, our real life, वो हम प्राप्त our real consciousness. असली जो चेतना है वो प्राप्त कर पाएंगे। So this is the purpose of ये असली Bhagavatam, उद्देश्य है। of Baladev Vidyabhushan. बलदेव विद्याभूषण। So, Baladev Vidyabhushan, continuing something about him. Initially, he was in learning Sanskrit, and he was a great Sanskrit scholar under the teacher of in the Parampara Madhvacharya. And then he became a very famous Pandit, Digvijay, conquering all other Pandits in debate on philosophy. And then in Jagannath Puri, he learned about Chaitanya Mahaprabhu from Sri Radha Damodar Goswami. Yes. And then he took Diksha, coming to Gaudiya Vaishnava Parampara. And he studied under Vishwanath Chakravarti Thakur. He was under Narottam and Mahaprabhu with the Goswamis. And he worshipped Radha Shama Sundar. And in 1706 AD, Vishwanath Chakravarti sent him to Gulta, near Jaipur in Rajasthan. Because there Ramanandi's part of the Sri Vaishnavas.
जो श्री वैष्णव थे रामनंदी जो थे South India, साउथ इंडियन Bengal, Sampradaya, Sri Vaishnava. श्री वैष्णव संप्रदाय They were saying that the Bengali Vaishnavas, they had no right to worship the deity in Jaipur, Govinda ji, Radha Govinda, because they had no commentary on Vedanta Sutra. तो उनका ये कहना था कि जो गौरी वैष्णव हैं उनको अधिकार नहीं है कि वो राधा गोविंद की पूजा कर सके क्योंकि उनके पास भागवतम जो वेदांत सूत्र है उसके ऊपर कोई कमेंट्री नहीं है, उसके ऊपर कोई टीका नहीं है. So then, under the direction of Vishwanath Bharati Thakur, Bhade Vidyabhushan gave the Govinda Bhasha, the commentary. विश्वनाथ के निर्देशन में बलदेव विद्याभूषण ने जो टीका प्रस्तुत की गोविंद भाष्य करके वेदांत सूत्र पे टीका प्रस्तुत की. So like that, he established Chaitanya Mahaprabhu's Sampradaya, coming from Lord Brahma, Narmuni, to Vedavyas, Madhvacharya, and then down to Mahaprabhu, and then down through the Goswamis, and to Prabhupada, and to me, and you. इस प्रकार से उन्होंने गौरी वैष्णव संप्रदाय को स्थापित किया. ब्रह्मा जी से शुरू होकर मध्वाचार्य होते हुए चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को होते हुए हमारे तक पहुंचा है. So what a great service that he has done. उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया हमारे लिए. Establishing Radha and Krishna as the absolute truth. राधा कृष्ण की पूजा को सबसे उत्तम बताते हुए असली Swayam Bhagavan, the original source of all the incarnations, avatari. जो असली भगवान हैं, अवतारी हैं, उनसे ही सब कुछ प्रकट होता है. इस चीज को उन्होंने स्थापित किया. With the most loving relationships of Raj. ब्रज के जो असली जो संबंध है जो वहाँ all glories to Shri Baladev Krishna. Now we can hear about Mother Ganga. गंगा जी के बारे में चर्चा करेंगे. So, there was many thousands of years ago, हजारों साल पहले, millions of years ago, करोड़ों साल पहले, but in King Mahasagara of the Ikshvaku dynasty, ruling from Ayodhya, विशाखु जो वंश था उसमें जो महासागर थे जो अयोध्या को राज्य कर रहे थे. he had two queens, Keshani and Sumati. उनकी दो रानियां थी, केशनी और श्रीमती. But they were not producing children. तो उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था. So then he performed very heavy tapasya. तो सगर महाराज ने बहुत भारी तपस्या करी. So they could give birth to a child. तो किसी पुत्र को जन्म देना है, किसी पुत्र को जन्म देना. So Keshani gave birth to one son called Asmajas. केशनी ने जो एक पुत्र को जन्म दिया उसका नाम असुंदर था. And Sumati gave birth to 60,000 sons. सुमति जो थी उन्होंने 16,000 पुत्रों को जन्म दिया. Can you imagine? Mataji, having 60,000 sons. पुत्रों को जन्म दिया. तो आप माता जी इमेजिन कर सकते हैं 60,000 How to take care of so many? कैसे उनका ध्यान रखा जाएगा. But as king, he had so many servants, so they were helping him out. राजा थे तो उनके पास बहुत सारे दास थे. So they were doing one Ashvamedha Yagya, वो एक अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे. the horse sacrifice. जो घोड़े का से सैक्रिफाइस यज्ञ किया जाता है, घोड़े की मदद से. So in the horse sacrifice,
जब वो अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, you send the horse out, and to establish that you are the emperor, that the horse goes to all the different kingdoms of all the different kings in the different places. अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि जो घोड़ा है वो सारे राज्यों को हो गया है, तो जिस भी राज्य में जाता था उससे हो गया था, तो जो व्यक्ति है जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वो उन सभी जगहों का राजा हो जाता है। And that horse is representing the emperor. और वो जो घोड़ा होता है वो राजा को प्रस्तुत कर रहा होता है। So those kings, if they accept the emperor as the main king, the emperor of all the kings, then they will give some gold and some अगर जो घोड़ा किसी राज्य में जाता है तो वहाँ valuable राजा अगर tax, some tax. देवी कर रहे हैं उस राजा को महाराज समझता है, तो फिर वो क्या करेगा, अपने यहाँ से खजाने से जो कुछ तोहफा और कुछ धन और संपत्ति देगा। And if they don't accept him, then they can challenge, so take the horse and then challenge the king, and then there will be a fight. Who is the most वो राजा जो राज्य का राजा जहाँ घोड़ा गया है उसको एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं इसको महाराज नहीं मानता, तो फिर क्या है, उसको पकड़ सकता है और फिर राजा के साथ युद्ध कर सकता है। So one time, एक बार but one time, the 60,000 sons were following the horse, एक बार 16,000 बेटे थे वो, and he entered a cavern, like a cave, a guha, where Lord Kapila was in meditation. एक बार 7,000 जो बेटे थे सगर महाराज के, वो घोड़े का पीछा कर रहे थे और घोड़ा जो है गुफा में चला जाता है जहाँ पे कपिल भगवान जो है वो तपस्या कर रहे थे। So the horse went in that cave, but they could not find the horse. जब जो घोड़े हैं वो उसमें घोड़ा जो है गुफा में गया था, लेकिन जब ये 7,000 पुत्र गुफा में गए तो उनको घोड़ा मिला नहीं। So they thought that Kapila, the sage, had taken the horse. उनको लगा कि जो कपिल देव हैं, कपिल मुनि हैं, उन्होंने घोड़ा लिया। Because he was a sage, they didn't try to kill him, but they were disturbing his meditation. क्योंकि वो साधु थे, उनको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ मार नहीं सकते थे वो, इसलिए उनको डिस्टर्ब कर रहे थे साधु। So then Lord Kapila, he made a sap, a curse, and they were burnt to ashes. फिर कपिल मुनि को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उनको श्राप देकर 7,000 पुत्र थे सबको मिट्टी में मिला दिया। And so then his father was very disturbed, and then he had his son Amshuman. तो सगर महाराज जो है उससे काफी विचलित हो गए और उन्होंने फिर अपने पुत्र अंशुमन से try to and then Sagara, he went in meditation, and then it was understood that somehow Ganga had to come and then then Kapila said, if you want to bring them back, then you must get the Ganga on their ashes. जब वो सगर महाराज ने ध्यान लगाया, कपिल मुनि से बात की, तो कपिल मुनि ने बोला कि अगर आप गंगा को प्रकट कर लेंगे तो उससे कि आपके 7,000 पुत्र हैं वो पुनर्जीवित हो जाएंगे। But even though the Ganga had come into the universe, it was only up to the heavenly planets, because Mother Ganga was afraid of all the pop on earth, of all the human beings. She did not want to come. वो वैकुंठ से भगवान के धाम से जो स्वर्ग लोक में तो आ गई थी, लेकिन पृथ्वी में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि यहाँ के लोग इतने पाप थे, उसको
उसको देख के वो प्रकट नहीं होना चाहते। So finally, the grandson of the great Bhagirati, he was able to approach Lord Shiva. But finally, he did meditation on Ganga. Ganga agreed she will come, but she said, "How can I come? Too much pop for earth. I will get so much disturbed by all the sinful. They will take bath and put their sins, and I will get so contaminated." तो सगर महाराज के ऊपर प्रॉफिट थे भगीरथ, तो उन्होंने फिर ध्यान लगाया और उन्होंने गंगा जी को मनाया कि वो पृथ्वी पर आए। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि मैं इस पृथ्वी पे आऊँगी, यहाँ जितना पाप है तो कैसे आ सकती हूँ यहाँ। And also that the force of Mother Ganga will destroy the earth. It was so powerful. दूसरी समस्या थी कि अगर वो ऊपर के लोगों से पृथ्वी पे रहेंगे, उनका जितना तेज भाव है, उससे पृथ्वी को नुकसान पहुंच सकता है। So then, Bhagirati was told that you have to go to Shiva, and he can protect the earth. तो फिर भगीरथी जी को बताया गया कि आप शिव जी से प्रार्थना कीजिए, वो गंगा को अपने सर पे धारण कर सकते हैं। So then, Lord Shiva, to get the mercy of Ganga on his head, coming when Vamana from the Vaikuntha is coming. Ganga is coming from Vaikuntha through the universe covering. When Vamana put his foot through the covering, and now Ganga is coming down from Vaikuntha to purify everyone. फिर गंगा है वो शिव जी के सर पे प्रकट हुई। शिव जी भी इससे बहुत पसंद है क्योंकि गंगा स्वयं भगवान के चरणों से निकलती है। तो जो वामन देव हैं उनके चरणों से निकली है गंगा, तो उस चीज़ को धारण करने में शिव जी को भी बड़ा आनंद हुआ और फिर गंगा प्रकट हुई। So then, Bhagirati, he did great tapasya to attract Lord Shiva, and Lord Shiva agreed, and then Mother Ganga came on the head of Lord Shiva, and from Lord Shiva's hair is very thin. Gangadhar coming, Ganga Devi, Ganga Mata is coming down, and we can all get mercy. तो अब हम क्या है कि बहुत तपस्या के बाद भगीरथ जी की तपस्या में शिव जी माने और गंगा प्रकट हुई और उनके सर से पृथ्वी लोक पर आई और हम सब उस कृपा का लाभ उठा पाए। Yeah, you can go to Gomukh, where Ganga is coming. हम गोमुख जाते हैं और वहाँ पे गंगा जहाँ से डायरेक्ट I've gone to by walk with Padayatra. They're up there now in Himalayas. तो जी वहाँ पे गए हैं पैदल चल के। Badrinath, Kedarnath, Gangoji, Yamunotri. You can go आप लोग भी जा सकते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, to like this. केदारनाथ, And बद्रीनाथ। very amazing experience. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत You अच्छा can go. होता है। And yeah, so Mother Ganga has come, and then came to the place with the ashes, and then they got heavenly bodies, and they went to the planets of the demigods because they get purified तो फिर क्या है from गंगा the पृथ्वी पर आ गई, opera. फिर उस जगह पे भी गई जहाँ पे 60,000 पुत्रों को भस्म किया गया, तो सभी लोगों को नया शरीर मिल गया और ऊपर के लोगों में सारे लोग चले गए क्योंकि वो शुद्ध हो गए। So then everything was okay, फिर सब कुछ ठीक हो गया and everybody's happy. और सब कुछ हो गया। So I think it's 9 o'clock. So I don't think it's necessary for the verse. So are there any questions about किसी का कोई प्रश्न है? Bhushan? Any questions about Mother Ganga, this pastime? इस लीला के बारे में या फिर बलदेव के बारे में? A comment? Yes, one question. थैंक यू टोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गंगा माता के बारे में बताया। So he's thanking that you told about Ganga Mata and the video.
पूरी में ये कुछ आप प्रोपाल जी के मिशन से कैसे जुड़े और अपने बारे में रियलाइजेशन शेयर करें। He is telling that to tell something about how you are connected with Prabhupada and what is the realization. Okay, it's after 9. We'll tell personally. So what is the time? कितनी देर तक और हम जा सकते हैं? Who is managing? 5 or 10 minutes. 5 minutes. So what is the question? We'll tell you how you got connected with Prabhupada and what some realization you'd like to share. Well, everybody can see how the quality of life is not very happy or healthy. हम सब देख सकते हैं कि हमारे जीवन की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी नहीं, बहुत आनंदमय नहीं है और बहुत स्वस्थ नहीं है। People are just heartless. जो लोग हैं वो बिल्कुल बिना हृदय के हैं। And we also have to develop heart हमें भी हृदय को विकसित करना है। to see their suffering and want to go out and give this message to the people out there like others did for us. हमें भी देखना है कि लोग जो है दुखी हैं और हमें एक ऐसा हृदय करना है कि हम भी उनकी मदद करने जाएं जैसे हमें किसी ने मदद किया। Not just to take mercy, but when you get mercy, that you have to also take responsibility to give that, to help Prabhupada, give that to others. हमें कृपा प्राप्त नहीं करनी, Guru. गुरु की कृपा देनी है। Who's representing Prabhupada. गुरु और प्रभुपाद जी की मदद करने के लिए हमें जो कृपा हमें प्राप्त है वो भी हमें दूसरों को देनी है। So, the father and the daughter, that they must have the same mood as the father, to help the father, to serve Prabhupada, to give this to others. पिता और बेटी का जो है दोनों में एक ही मूड होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। Because of the great sacrifice of Srila Prabhupada and so many devotees, you can read in the Lilamrit. There's a short book and there's a full 6 volumes. And in Hindi it's 2 big ones. In English it's 6 or 7. And I've read that 15 times. हम सब देख सकते हैं कैसे लीलामृत के अंदर प्रभुपाद जी के बारे में और उनके शिष्य के बारे में बताया गया। 6 वॉल्यूम की इंग्लिश की बुक है और एक छोटी बुक भी है और हिंदी की 2 वॉल्यूम की बुक है। प्रभु जी बता रहे हैं कि 15 बार लीलामृत पढ़ चुके हैं। And to get to know Krishna so I can love him and purify my mind. 84 times I've read Krishna book. भगवान से प्रेम उत्पन्न करने के लिए और विष्णु के बारे में जानने के लिए मैंने 84 बार कृष्णा बुक पढ़ी है। Full Barskan. Yeah, but this is serious to change the mind and put Krishna in the mind. We have to be serious, like in the school for becoming criminals. They study very seriously to become expert politician, expert business, to be expert cheater. No, they study very seriously. But for Krishna, oh no. I have the book and I maybe look at it 5 minutes, maybe, or nothing. And I just chant a little bit and I come to the temple. And maybe we have material ideas in our mind. Material desire. We are not trying to change our heart. हमें बस सिंसियर और सीरियस बनना पड़ेगा। For material benefit, we're looking for Krishna. इसीलिए स्कूल में हम जाके क्रिमिनल बनने के लिए इतनी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इतने अच्छे से अध्ययन करते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक पुस्तकों की बात आती है तो हम क्या 5 मिनट किताब को देखते हैं, बोले ठीक है मैंने 5 मिनट कर लिया, मैंने थोड़ा जब कर लिया, ऐसे करके हम छोड़ देते हैं। तो हमें बहुत सिंसियर और सीरियस बनना पड़ेगा अपने भौतिक मन को साफ करने के लिए। So we have to take the medicine. हमें दवाई लेनी होगी to purify the mind. अपने मन को शुद्ध करने के लिए। Karela, neem, that's very bitter, but it's very purifying. लेकिन उसको बहुत शुद्धिकरण करता है। So, like rock candy is very sweet, but when you have jaundice, it's very bitter because you're sick. Your liver disease. लेकिन जब हमें जॉन्डिस की बीमारी होती है तो वो हमें कड़वी लगती है। But it's bitter, but actually it's sweet. But by taking the rock candy,
gradually your blood become purified, and then you can taste the sweetness. But you must take it. मीठी होती है लेकिन हमें कड़वी लगती है Because of your disease, it's bitter. You don't like it. क्योंकि हम बीमार हैं लेकिन अगर हम मिश्री को But we must take it, and gradually you get better. जैसे हम लेते रहेंगे तो हम धीरे-धीरे शुद्ध हो जाएंगे फिर हम मिश्री की मिठास करने लगेंगे So we must chant minimum 16 rounds. कम से कम 16 माला का जप Minimum. कम से कम And always be chanting and thinking of Krishna. That means we must hear to be able to speak. Then we can think. What we hear, that's what we'll think about and what we'll speak about. इसके अलावा हमें भगवान के बारे में सोचना चाहिए और सुनना चाहिए तो हम बोल पाएंगे भगवान के बारे में And then we can see Krishna with the material energy, with the spirit, his spiritual, how everyone is our family. We have to get this in our mental database. We must देख change. पाएंगे कि कृष्ण कौन है कैसे भौतिक दृष्टि है हर चीज को हम सही से देख पाएंगे Like a child just wants to play, but he has to go to school, otherwise he'll be on the street. जैसे एक बच्चा है वो क्या है खेलना चाहता है लेकिन उसको स्कूल जाने की आवश्यकता है He cannot have a wife, he cannot get married, he cannot do anything. तो कुछ नहीं कर पाएगा रोड पे घूमता रहेगा नहीं उसकी शादी हो पाएगी So you have to go to school. उसको स्कूल जाना पड़ेगा So this is the school of life. ये For the soul. जीवन का स्कूल है आत्मा का स्कूल है And this is the foundation for all of our material duties, so that we can do it as a godly person. Not like animal, just for the body and for money, but simple living, high thinking. ये जो ज्ञान है ये हमारे जो भौतिक कार्यों का भी फाउंडेशन है भौतिक कार्यों का भी नींव है अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम जो भौतिक चीजों को भी आध्यात्मिक चेतना में नहीं कर पाएंगे That eventually some people can follow like him with the cows on the farm, Akiladhara, with the bale, not tractor, but with bale gutty, with the plow, and gobar, not with chemical fertilizer, destroying the earth for money, but sadajivan, ucha vichar. तो फिर धीरे-धीरे हम इनके पत्थर से कमरों में फॉलो कर सकते हैं और गाय रख सकते हैं और ऐसे खेती कर सकते हैं और वहाँ पे हम जो जुताई भी बैलों से करें और अपने आप को मतलब सादा जीवन उच्च विचार के हिसाब से करें And I understood, everybody knows, but nobody wants to do it, but I saw it and I wanted to do it, and I could not see anybody really wanting to know God and follow His way. And nobody teaching that, even in religion. कोई चीज़ के बारे में बता दिया है और हम सब करना कोई कर नहीं रहा तो हम भी करना नहीं चाहते हैं All for material enjoyment, for the body, the religion, the government, the school, the cinema, everything. हर चीज़ भौतिक इंद्रिय के लिए स्कूल सिनेमा समाज गवर्नमेंट सब कुछ And so I was suffering. I saw they were just trying to destroy the quality of my life. I wanted the best quality, but I could not find guidance. मैं बहुत दुखी था और मुझे जो है मैं ऐसे जो घटिया जीवन नहीं जीना चाहता था And then I went by walk. I studied acting and to want to make godly films, to inspire people. तो मैंने जो है जो एक्टिंग है उसकी पढ़ाई करी और मैं उस Give them some choice. भगवान के ऊपर जो So I was searching for God while I was studying acting for film. जी जो है वो भगवान के ही बारे में ढूंढ रहे थे और एक्टिंग सीख रहे थे साथ साथ In New York, and then I went to London, न्यूयॉर्क में लंदन में and then my last semester, लास्ट सेमेस्टर में I saw people with big money, like $15 million, to make some big movie. That they would not make a film like that anymore. They changed. 50 करोड़ रुपए So corruption. लोग जो बड़ी-बड़ी मूवीज बना रहे थे So if I could not serve God with to make money, then I did not want to make money. I would starve. अगर मैं भगवान के If I had लिए to support their corrupt system. अगर मैं भगवान के लिए कुछ नहीं कर पाता भगवान के लिए मूवी नहीं बना पाता तो इससे अच्छा होता है कि मैं भूखे मर जाऊं So from England I went by walk, and then I took a ferry
I would put my thumb and I would keep walking to find God, His way, without corruption, real guidance. तो इसीलिए प्रभु जी जो है पैदल चले गए भारत की तरफ और मतलब एक भगवान की खोज में. And I went from England इंग्लैंड to से Belgium, Holland, Germany, जर्मनी है, Denmark, डेनमार्क है, Sweden, up to Norway to see the northern lights. Like you might go to Himalayas. I went to see the northern lights to be alone with God. And He would guide me. He would guide me. He was guiding me from within. Because I had nobody to help me. No friend. I saw everyone who could not help me or care for me. And I only had that in the heart and voice. Now your conscience. You know how sometimes you see cartoon, the person says, oh, help that old lady across the street. The angel, you know. हमने कार्टून देखा होगा जिसमें बोलते हैं help a old man to cross the street. बूढ़े व्यक्ति को सड़क क्रॉस करने के लिए. And then you see the other one, no, the demon, you know. दूसरा असुर go find some girl, go to the bar, get some drink, and forget it. असुर व्यक्ति होता है वो बोलता है कि नहीं इसकी मदद मत करो. Mine. चलो हम लोग बाहर में जाते हैं करते हैं. This. तो दो कैरेक्टर हैं. So I realized that voice was giving me information, and this must be God. समझ में आ गया था कि जो भी मुझे ज्ञान मिल रहा है भगवान दे रहे हैं. And then I began bringing to get guidance and Sharon, like a child with the mother and the father, I would bring my mind into the heart. तो मैं अपने मन को अपने हृदय में लाता हूँ और भगवान के संरक्षण में अपने आप रखता हूँ. So much mental disturbance, I was suffering. बहुत शांति मुझे मिलती थी. In a world full of confusion, I was full of दुनिया बहुत भ्रमित करने वाली only है. I had the God as my और सिर्फ friend. मेरे पास सिर्फ भगवान थे मेरे जीवन. सिर्फ भगवान. And then I found in Norway, somebody gave me a ride in the car. I was putting my thumb, and if somebody gave me a ride, then I would get a ride. तो किसी ने मुझे अपना जो था मेरे वो ऐसे दिखाते रहते थे. किसी ने उनको एक राइड दी. And in Oslo, Norway, he had many books. I stayed 1 week with him because we became like friends. तो ऐसे नॉर्वे में उस व्यक्ति के साथ मुझे की दोस्ती हो गई और वो उनको एक स्टोर में ले गए जो उनके पास बहुत सारी किताबें थी. तो प्रोजेक्ट के साथ एक हफ्ते रुके. And inside my heart, I would go. So many books when he was working in the daytime. He had many books. And when I would be around books, any books for me here? Yes, the voice. Put your hand up. Go down. Stop. Go left. Stop. And it was Bhagavad Gita. Prabhupada. You have to Prabhupada. तो प्रभु जी जो है वो वहाँ से उनके दोस्त के घर के जब दोस्त काम पे रहता था तो प्रभु जी दिन के समय में अपने परमात्मा के हृदय से बोलते मेरे लिए कोई किताब है यहाँ पे. तो प्रभु जी ने बोला लेफ्ट अंदर से आवाज आई लेफ्ट जाओ राइट जाओ. और फिर वहाँ पे जब गए तो प्रभु जी को मिली भगवद गीता यथार्थ. हरि बोल. But then any more book. Yes, put your hand up again. Go down. Stop. Go right. Stop. And it was Krishna, Krishna book. हरि बोल. तो फिर प्रभु जी को एक कोई और किताब है मेरे लिए. तो फिर प्रभु जी ऊपर गए फिर नीचे आए फिर राइट गए और फिर वहाँ पे कौन सी बुक थी? कृष्णा बुक. And this famous singer, rock singer, George Harrison from the Beatles, he gave donation of $19,000 for the printing of Krishna book. And he put something in there about Krishna in the book. You will see in Krishna book. तो फिर जो 19,000 रुपए जो है जॉर्ज हैरिसन जो बहुत बड़े सिंगर थे उन्होंने दिए थे कृष्णा बुक को छापने के लिए. और when I read that, every word was inspired. तो फिर जब प्रभु जी ने उसमें जो जॉर्ज हैरिसन ने लिखा है आप देखेंगे कृष्णा बुक के पृष्ठ में वहाँ पे जॉर्ज हैरिसन के वर्ड्स हैं. जब प्रभु जी ने उनको पढ़ा तो फिर प्रभु जी बहुत इंस्पायर्ड हो गए. Now there's only one God, Allah, Buddha, Jehovah, Ram, Krishna, all are same supreme Lord.
तो सभी एक ही भगवान है, One God. जो हुआ, सभी एक ही भगवान है। Yeah, Ek Bhagavan. For everyone. Just सबके different एक ही name. भगवान है, सिर्फ नाम अलग है, Same person. एक ही व्यक्ति है। And I was very inspired. इससे बहुत प्रभावित हुआ। He said, by serving God through each word, thought, and deed, and by chanting His holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One quickly arrives at Krishna, God conscious or Krishna consciousness. The proof of the pudding is in the eating. By doing it, you taste it. तो प्रभु इसमें लिखा हुआ था कि भाई भगवान की सेवा करके मनसा वाणी और कर्म से सेवा करके और जो हरे कृष्णा मंत्र का जप करके हम जो है भगवान की चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। और इसका साक्षात्कार कैसे होगा? अगर आप केक खाएंगे तो उसका स्वाद जान पाएंगे, तो करके ही आप उसका स्वाद जान पाएंगे। And I became so inspired, and I memorized the Maha Mantra. और प्रभु ने इससे इंस्पायर हो गया मैं कि मैंने पूरा महामंत्र memorized. And then after 1 week, I again went on the highway. और एक हफ्ते के बाद दोबारा से मैं हाईवे पे खड़ा हो गया। But then I ended up in Holland, in Amsterdam. और उसके बाद मैं हॉलैंड एम्स्टर्डम में पहुंच गया। And there, very much drugs and sex, वहाँ पे prostitution, नशा और very many people coming for this purpose from all over the world. हॉलैंड पे बहुत सारे लोग नशा करने के लिए, विचार करने के लिए आते हैं। And there's no place. Only for $200 you have to get to sleep in a room. You have to pay $200 because all the cheaper places were full. रहने के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। सब नशा करने वाले लोग बेचारे $200 पे करने पड़ते थे एक रूम प्राप्त करने के लिए। So I began chanting out loud to get the guidance of the Lord that He could तो मैं बहुत जोर से जप take care of me. भगवान I'm की His child. I'm trying to find it. भगवान की गाइडेंस के लिए, भगवान के केयर को प्राप्त करने, भगवान की जो संरक्षण है उसको प्राप्त करने। And then there's one poster for a youth hostel, you know, travelers hostel. तो फिर एक dormitory, हॉस्टल, $5-6. पोस्टर दिखा जो एक यूथ हॉस्टल का था, तो वो सिर्फ $5-6 का था। And so I saw this is a sign. So I tried. I go there by walk. तो ये लगा कि ये सही जगह है, यहीं मुझे जाना चाहिए। And then I'm chanting also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama on the street. रास्ते में कोई जप करते हुए जा रहे हैं। And I didn't care if people thought I'd be crazy because at least I would be guided and protected by the Lord, and they would get the mercy of hearing the holy name. प्रभु जी जो है लोगों के बारे में चिंता नहीं करते, लोग सोचते होंगे कि पागल हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान मेरा गाइडेंस कर रहे हैं, मेरी मदद कर रहे हैं और दूसरे लोग जो उसको सुनेंगे उनको लाभ पहुंचेगा। So just 3 buildings before that youth hostel. 3 जो बिल्डिंग थी उस यूथ हॉस्टल के 3 बिल्डिंग पहले, In one window in the building, एक जो ग्लास था, एक शीशा था, a poster of Radha and Krishna. राधा कृष्ण का In the एक window. पिक्चर था, एक फोटो था। And I remember the same painting, same picture on the Krishna book. That I कृष्ण बुक remember. में जो फोटो है वही फोटो थी। Same. सेम, बिल्कुल सेम। And then again inside my heart, this you've been prepared for. This is the final journey home. तो फिर आखिरी डायरेक्शन मिला, ये जो है मेरा असली जो फाइनल घर है, फाइनल जगह है वो ये। And just at that moment, one devotee was outside, and he said, "We have big free vegetarian feast, free. Why don't you come inside?" अरे वो और उसी समय एक भक्त वहाँ से बाहर निकले और उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास बहुत सुंदर शाकाहारी व्यंजन का फीस्ट है, प्रीति भोज है, तो आप अंदर क्यों नहीं आ जाते? And they were speaking so much deep knowledge of the soul, reincarnation, being vegetarian, how we should have compassion for all living beings and not eat meat, fish, and and such high quality principles and character and knowledge. I was so inspired. और वो इतने सारे ज्ञान की बातें कर रहे थे, आत्मा के बारे में, हम कौन हैं,
और कैसे हमें शाकाहारी रहना चाहिए और हमें सभी जीवों के बारे में सोचना चाहिए, ये सब सुनकर And Jagannath was in the temple, and Balaram, Subhadra. I never saw anything like Jagannath, anything like the deities. I had no experience. तो सब सुन के वैसे ही चंबित हो गए थे और वहाँ पे जगन्नाथ मंदिर शोभामान थे जिनको मैंने कभी नहीं देखा था, तो वो देख के मैं और क्या आकर्षित हो गया। In a whole big room like this, completely full, with people jumping and dancing. और ये पूरा हॉल पूरा भरा हुआ, सारे लोग उछल के गा रहे थे, नाच रहे थे। I never experienced anything like कभी this. मैंने ऐसा कभी कहीं नहीं देखा था, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। And then the feast, the prasadam. फिर प्रसाद की व्यवस्था। That time they would make like paneer sabjis, 3 sabjis, 5 sweets, halwa, jalebi, wrap, sandesh, gulab jamun. So I was tasting, oh, this sabji, tasting this, chapati, rice, dal. I was trying everything. तो बहुत सारे व्यंजन थे और हम कुछ चीज़ें चपाती, गुलाब जामुन, बहुत सारे स्वीट हलवा, थोड़ा मैं टेस्ट कर रहा था। But then my stomach got so. फिर लेकिन मेरा पेट पूरा भर चुका था, बहुत ज़्यादा हो चुका था। And I could not stand up because I was खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि my stomach was too much. क्योंकि पेट पूरा भर चुका था। And so I'm sitting. और मैं So I बैठ can गया get digestion. कि मैं थोड़ा खाना पच जाए और मैं And everybody go, they finish, they leave the prasadam hall. And I'm sitting by myself in the room with my backpack. प्रसाद का रूम था, वो सब साफ हो गया, सब लोग चले गए, मैं बस बैठा हुआ था। And then one Mataji comes. और फिर एक माताजी And she आती sees me sitting. मुझे देखती है बैठी हुई। She says, "Why are you sitting like वो this?" पूछ रही है, आप क्यों ऐसे बैठे हो? And I say, "Because it was so nice, this great. I never took such a feast." तो ये कर रहे थे कि प्रसाद इतना अच्छा था कि मैंने कभी ऐसा कुछ प्रसाद खाया नहीं था। But now I have some digestion problems. बट लेकिन अब मेरे पेट में कुछ समस्या हो रही है। So I'm digesting. अभी मैं इसको पचाने का प्रयास कर रहा हूँ। So she says, "If you're not feeling so good, why don't you go with the president, the manager? Maybe you stay here today." अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप क्यों नहीं हमारे प्रेसिडेंट के साथ Talk with him. और हमारे साथ उनसे बात Maybe you can stay. आप रुक जाइए यहाँ पे। I think, wow, that way I can get full experiment to really study these principles and these books and to practice without outside distraction, so I can give it a real concentrated experiment. तो फिर रोजी को बहुत खुश हो गया, ये बहुत अच्छा है। मैं यहाँ रुक के पूरे शास्त्रों को पढ़ के समझ के यहाँ पे पूर्ण ध्यान के साथ मैं यहाँ पे रह के समझ सकता हूँ। So I talked with Lochanananda, the president, and then he says, "I'm not just some hippie looking for some sex gratification and some free place for sleeping, but that I'm serious to know God and to follow Him." तो ये लोचानंद प्रभु से मिले और उनको बोला कि मैं हिंदी नहीं हूँ, मैं सीरियस व्यक्ति हूँ और मैं ज्ञान भगवान के बारे में जानना चाहता हूँ। So I go up on the top floor with Brahmacharya ashram. फिर सीधा ब्रह्मचारी आश्रम में चले गए ऊपर। And I go to Mangalarti. फिर मंगला आरती गए। And then I get some japamala. फिर जपमाला मिल गई। And I start with 4 rounds. चार माला करी। And then the next day, I got to 8 rounds. अगले दिन 8 माला करने लगे। And the next day, I got to 16 rounds. उसके अगले दिन से 16 माला। And since that day, I've been following. तब से 16 माला आज तक करने लगे। Very good. And then learning to do seva, cleaning pots in the kitchen, and also cleaning the prasadam hall where I was eating. Also cleaning the as my service. And then I see the Sankirtan devotees coming from traveling all over, distributing books. When they come back to the temple, they're so
जब वो मंदिर में आते थे तो बहुत उत्साहित रहते थे। So utsaha, so much enthusiasm. Huh? Yes? You spoke? Really, that just for time. Yeah, I just finished. I'm finishing now. So, anyway, so then I talk with President and I say, hey, I would like to also go out and distribute these books. तो फिर मैंने प्रेसिडेंट से बात किया, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी किताबें बांटनी है। And so he said, you are new, better you study a little more, practice in the temple some more time. प्रेसिडेंट ने बोला आप थोड़े नए हो, आप थोड़ा मंदिर में रुको, थोड़ा पढ़ो, शास्त्रों को समझो। So then 2 more weeks go by. 2 हफ्ते और निकल गए। And again, I'm asking him, oh please, can I go out? फिर मैंने पूछा क्या मैं जा सकता हूँ बाहर? And then he says, okay. फिर उन्होंने बोला ठीक है। And so my whole life I'm traveling, और तब से आज तक preaching and distributing books. Even in my bag, I have Marathi, Hindi, Gujarati, so many languages I don't even speak. And I meet people, English. And so I'm always ready to meet people. And we can always think like that. To always be ready when we're with people. Even people who come to the temple, we always be ready to give this knowledge. हमें हमेशा तैयार होना चाहिए कि जो भी लोग आए उनको पुस्तकें दें, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमारे बैग में पुस्तकें होनी चाहिए। And then you become a real friend to others, and then you get real friends because you care for others. तो तब आप You असली practice मित्र, caring for others, असली मित्र seeing को their ढूंढ suffering सकते and हैं। ignorance. And so we have to also inspire each other to follow these principles and become serious shishas, serious disciples, serious students, and give this to others. Now other Mataji's are suffering very much. This Bollywood, Hollywood kind of criminal suffering. And we must help others, not just our own skin family, but see everyone as our family. Everyone. This is तो हमें असली मित्र Bhakti Marg. दूसरों को पुस्तक देके उनका असली मित्र बनना है। तब Everyone is my family. This is Bhakti. Okay. हरे कृष्णा। तो आखिरी संदेश ये है कि पुस्तकें दें और दूसरों को दें तो उनको असली मित्र आप बना सकते हैं और आपको भी फिर असली मित्र बनेंगे और इससे सभी सुखी हो पाएंगे। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। Das, Mani Das. इसलिए अखिलाधर प्रभु जी की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम